हम सबसे पहले सभी क्लिप्स में स्मूथ स्लो मोशन ऐड करेंगे एंड उसके बाद उसको साउंड की बीट से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद की फ्रेम्स को ऐड करेंगे एंड उसमें फ्लो टू ग्राफ को ऐड करेंगे। अब हम वर्टिकल ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे एंड उसमें भी की फ्रेम्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट वाली की फ्रेम में 65 तक का ब्लर कर रखेंगे एंड सेकंड वाली क्लिप में 0 कर देंगे। अब उसको डुप्लीकेट करके 0 कर देंगे। वैसे ही बाकी सभी क्लिप्स में हम ऐड कर देंगे। अब प्ले पेंडुलम इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड उसमें इंटेंसिटी 31, ट्विस्ट 0, स्पीड 40, शार्पन 50। एंड उसके बाद हम रीबाउंड स्विंग इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड उसमें भी स्पीड को 40 एंड साइज को रखेंगे 20 एंड इंटेंसिटी को 0 कर देंगे।
वैसे ही हम कैमरा शेक इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड उसकी रेंज 10 तक रखेंगे एंड स्पीड को 25 रखेंगे। अब क्लिप्स में अच्छे वाली डिटेल लाने के लिए HDR2 इफेक्ट ऐड करेंगे। अब कलर फ्लैश करके इफेक्ट है उसको ऐड करेंगे, उसको अलग अलग क्लिप में ऐड करेंगे। देन हम वाइट ओवरले ऐड करेंगे एंड उसमें आउट एनिमेशन फेड आउट ऐड कर देंगे एंड ब्लेंडिंग ओवरले ऐड कर देंगे एंड ऐसे ही सभी में ऐड कर देंगे।